Good morning to all of you. आ रहे हैं अंदर आ जाएं. We'll start the proceedings now. Volunteers, please. जो बाहर हैं उनको अंदर ले आने बोल दीजिए, please. Actually, we were waiting for the chief guest, but now we came to know that उनको बोल दिया गया कि आप पद यात्रा में जाना पड़ेगा, इसमें मत जाइए. आजकल इलेक्शन का टाइम है, तो आई यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. इसलिए हम लोगों को ये रहता है कि अगर आप मिनिस्टर को या किसी एमपी को, एमएलए को बुलाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर हो जाता है हमारे साथ में कि एंड टाइम में पता चला कि उनका कोई दूसरा एंगेजमेंट आ गया या कुछ दूसरे डायरेक्टिव्स आ गए, और वो डायरेक्टिव ऐसे होते हैं कि वो आपको मानने ही पड़ेंगे. तो चीफ गेस्ट ने बोला है कि आई विल सी इन बिटवीन, जब मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँगा पद यात्रा से, तो मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा. सो दैट इज़ द फीडबैक. सो आई थॉट लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू. CSR एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ CSR रिसर्च फाउंडेशन के बारे में. आई थिंक काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता होगा. CSR रिसर्च फाउंडेशन, इट इज़ चेयर्ड बाय CA दीनदयाल अग्रवाल जी, एंड ये संस्था पिछले करीब 10 साल से CSR का काम कर रही है. और जो मेन इनका जो इनिशियल प्रोग्राम जो हुआ था, वो सैनिटरी नैपकिन से शुरू हुआ था. उसका अवेयरनेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट इन 2015 विद दैम. एंड वो रिकग्निशन इतना अच्छा हुआ कि अक्षय कुमार जी एक बार आए थे, जो आपने पिक्चर का नाम सुने कि पैडमैन, उसमें उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ अवेयरनेस की थी. तो ये सो हैप्पी कि उन्होंने हमारी जो मशीन थी उसको पूरा ऐसे उठा के उसकी पब्लिसिटी एक तरह से कर दी थी. तो कभी कभी तो आपको बुलाना पड़ता है ना सेलिब्रिटी को पब्लिसिटी के लिए, बट हमारी पब्लिसिटी ऐसी हो गई जस्ट. एंड दिस इज गुड वर्क ऑफ CSR रिसर्च फाउंडेशन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री दीनदयाल जी अग्रवाल. CSR एक्चुअली मैं थोड़ा इसको डिफरेंट टाइप से लेता हूँ. CSR को there are two type of CSR. One is a reactive CSR and one is a proactive CSR. We have with us Dr. Alka Mittal, who was the chairman of ONGC. We started some of the proactive CSRs. Reactive is somebody is telling you, some minister is telling you, some compulsions comes to you, भाई ये करना है आपको, and you do that. So that's actually not a CSR. ठीक है, कंपल्सन है, आपको बोला गया है, आपके बॉस ने बोला है, किसी से डायरेक्टिव आया है, मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव, आपने उसको कर दिया. बट एक्चुअली कम्युनिटी को अगर फायदा करना है तो वी हैव टू गो फॉर ए प्रोएक्टिव CSRs. रिसेंटली अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैडम से अभी बात हो रही थी. वी विजिटेड राजस्थान सम ऑफ द प्लेसेस एंड वी हैव सीन सम ऑफ द स्कूल्स. तो हमने देखा कि वहाँ स्मार्ट क्लासरूम की बहुत ज़रूरत है. तो मिस्टर S.K. Gupta is sitting here. We met him. He is a chartered accountant in Alwar, Rajasthan. तो हमने कहा यहाँ कुछ हो सकता है. He said yes, we can start, and with the local MLA at that time, we visited some of the schools and we have donated about 70 smart classrooms there in the villages. And today the feedback is they are running very fantastically, and for that गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हमको भामाशाह का अवार्ड भी दिया था. वो हमने अवार्ड के लिए नहीं किया था काम, बट एक ताकि कुछ लोगों को उसका फायदा हो जाए. So that was the reason, and madam went for that award and she received that Bhamasha award for on behalf of ONGC. So that kind of CSR one should do. वो ऐसा नहीं कि हम कोई हमको बोलेगा कुछ करना, वो अंदर से आना. It should come from within. I'll just give an example, one more example. I was in Tripura. I was a executive director there and I was head of the asset complete. And somebody told me that there's a community called Korbong and they are only 100 in numbers. And when I was discussing with one of the tribal who was with me, Jamatia tribes, so he said, sir, there is one village, there are 17 families lives in that village.
I said, can we go to that village? Well, sir, that a lot of insurgency is there. It's very difficult. Anytime they can kill anybody and all this. I said, we are going for a good cause. Let's go there. Then he said, sir, जाने के लिए वो पुल भी नहीं है. वो पानी में से जाना पड़ेगा. करीब 1-2 फुट पानी है, नदी है, उसमें से जाना पड़ेगा. I said, let's go there. No problem. बाकी लोग भी जाते हैं ना, तो we'll also go there. When we went there, we found there were 17 families in a small village surrounded by the thick forest. तो इंटरप्रेटर को लेके गया था साथ में, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दैट क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए. एंड व्हेन इन द आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ डिस्कशंस वी केम टू नो दैट दे नीड मेनी थिंग्स. एक गांव में रोड भी होना चाहिए, एक छोटा स्कूल भी होना चाहिए, कोई स्कूल भी नहीं था वहाँ पे एक मार्केट भी होना चाहिए, और उनका लाइवलीहुड के लिए भी कुछ कुछ होना चाहिए, एक कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए. And instantly we took a decision, let's do something for that. And when I came to the office, हमने एक प्रपोजल बनाया कि इस गांव में ये सब होना चाहिए, कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी को प्रिजर्व करना है. और उस कम्युनिटी के साथ जब डिस्कशन हो रहा था तो वो बोलते थे कि सर हम दूसरी कम्युनिटी में शादी नहीं करते हैं. ट्राइब्स हैं, वो भी ट्राइब हैं, कॉर्बंग ट्राइब. हमने कहा आप जमातिया में शादी करते, त्रिपुरा में क्यों नहीं शादी करते. वो कुछ जो भी उनका रीज़न रहा हो, बट वी ट्राई टू सी दैट ये भी काम चालू करें. अगर आपको नंबर्स बढ़ाने हैं तो ये करना पड़ेगा. अगर आप सेम ट्राइब्स में रहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे थोड़े दिन बाद. तो पता नहीं वो काम किया या नहीं किया, बट और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, उस गांव में सिर्फ एक ही बच्चा था जो 10th पास था. तो ये प्रोजेक्ट कंसीव किया था व्हेन आई वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर. And by that time, execution ka time, I became director of the company, and Alka Mittal was again there. And she said, "Sir, we'll do that, and let us." And that proposal was approved. And as a director, I went there after things were done. The roads were there, school was made, market was there. It was allotted to 3 people. So all this thing, कुछ लोगों को डक रियरिंग के लिए दे दिया, कुछ लोगों को पिगरीज कर दिया. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ डेवलप हो गई. सो व्हेन आई वेंट देयर, इट वाज ए वेरी शाई कम्युनिटी. वो कभी से बात नहीं करते थे. दे अरेंज्ड ए प्रोग्राम. आप सोचिए, देखो कितना डेवलपमेंट है. इस तरह से सीएसआर को इस तरह से करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव सीएसआर. वो आए, बच्चों ने डांस भी किया, एंड आई केम टू नो दैट 3 गर्ल्स बिकेम पास हाई स्कूल देयर. सो दैट काइंड ऑफ थिंग, if you do that, really you are doing real service to the, I can say, the needy people. And as per the guidelines, normally CSR you do wherever you are present, but nowadays that's it's not like that. Wherever you feel कि जहाँ हमको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है, हमको उसको कर देना चाहिए. जैसे हम राजस्थान में ओएनजीसी की प्रेजेंस नहीं है अलवर वलर क्षेत्र में, बट हमने किया उसको. तो इस तरह से आपको अगर विद इन आपको नहीं लगता है कि हमको कुछ करना चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, जस्ट किसी के बोलने से करना है, वो खाना पूर्ति नहीं करना है. जितने लोग यहाँ बैठे हुए, एटलीस्ट यू टेक दिस दैट कि हमको जो सीएसआर करना है वो प्रोएक्टिव सीएसआर करना है. कंपल्सन में रिएक्टिव भी करना पड़ता है. सो वी हैव 2 of our guests present here. Sri R.R. Jayashankar ji, Managing Director IIFCL. I request him to please come to the dais. I think he has come. And we have Dr. Alka Mittal, former chairman of ONGC, a very dynamic lady and first chairman of ONGC, woman chairman of ONGC. पहली बार, first director and first chairman. So I request her to come on the dais, please. वो ऐसा बोलते हैं ना, ऑयल एंड गैस में लेडीज क्या करेंगी, ऐसा नहीं है. बट नाउ दे आफ्टर शी केम एज ए चेयरमैन ऑफ द कंपनी, शी मेड श्योर दैट मोर एंड मोर फीमेल आर कमिंग इनटू द बिजनेस, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. बिकॉज अभी इफ यू सी रिसेंटली वन ऑफ आवर डायरेक्टर इन ओएनजीसी, मैं ओएनजीसी में रहा हूँ इसलिए मैं आई रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर फ्रॉम ओएनजीसी. तो उस कंपनी की बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ. एंड डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन
She is also a lady. First time director exploration became, the female has become a director of ONGCS. And she was the lady who started her career going in the field. During that period, I remember in Chennai at that time. And she and one of her friends both used to go to the field. No facilities were there, but still they did that hard work, and today she's director of the company. So that is the way uh, females are coming up in oil and gas industry. हाँ जी. सर कोल इंडिया से हैं इसलिए वो बता रहे हैं कि कोल इंडिया में भी अभी लॉट ऑफ वुमेन्स आर कमिंग. अभी काफी पीएसयूज की हेड्स अभी वुमेन्स आर कमिंग देयर. सो है जी. अच्छा अच्छा. वो आपके डायरेक्टर बैठे हुए हैं. नहीं अभी सारे पीएसयूज में आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इट, थिंकिंग डिफरेंटली. आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग द इवन द पीएसबी चेयरमैन, शी इज अ लेडी. आई थिंक इफ यू आर गिविंग गुड इंटरव्यू एंड इंटरैक्टिंग the way they want, I think you can become a director. So that is kind of things are happening. So I'm really happy that women are coming forward and taking these kind of positions, directors and chairmans, and they are running very well. Under her leadership, ONGC made the profit about 40,000 crores, which is highest till date. So so that kind of thing can happen. So जैसे घर में बचत कर लेते हैं ना लेडीज लोग, उसी तरह से इन्होंने वो फार्मूला वहाँ भी लगा दिया, कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं और किस तरह से हम जुडिशियसली पैसों को खर्च कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि शी हैज टेकन अ बोल्ड डिसीजंस आल्सो. द डिसीजंस वर पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 years, and when she came to the power she did took those decisions, thousands of crores of decisions. So that is also, comes from within when you start thinking that this is my organization and we have to work for it. So with this small introduction, I'll invite Sri Dindayal Agarwal ji for a welcome address. थैंक यू बीपी मावर जी. मंच पर उपस्थित डॉक्टर अलका मित्तल जी, आप फॉर्मर सीएमडी रहेंगे आप ओएनजीसी लिमिटेड के. श्री पीआर जयशंकर जी, आप एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है आईआईपीसीएल लिमिटेड. और मैंने जब भी भाई साहब से कोई रिक्वेस्ट की है पीआर जयशंकर जी से, उन्होंने हमेशा मेरे कहा कि भी कोई बात नहीं, आप जब बुलाएंगे मैं आऊँगा. मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. ऐसी अलका मित्तल जी ने भी जब भी मैंने इनवाइट किया है तो वो आती हैं और हमारा अपना मार्गदर्शन देती हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सभी को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ. हमारे बीच में डॉक्टर अर्चना मजूमदार जी हैं. मैं एक बात चाहूँगा, आप प्लीज इनके लिए, आप मॉल इंडिया लिमिटेड से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि सीएसआर फंड को पूरा देखते हैं. कोई जनरली मैंने देखा है कि जो सीएसआर कमेटी होती है उसमें जो चेयरमैन होता है, मैडम मैं आई भी करेक्ट, वो जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं. सर सही कह रहा हूँ मैं? तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे 6 कंपनी से आए हैं. एक एनबीसीसी के हैं हमारे असीम मिश्रा जी, आप प्लीज. भीमराव भोंसाले जी, आप भी एनबीसीसी से. हमारे घनश्याम जी सिंह जी, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आरआईएनएल से हैं. और सौभाग्य की बात है हमारे पास 2 लेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आई हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है. सेकंड है मिस उषा संजीव नायर जी, आप पीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. और मैं चाहूँगा कि आप सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो जिस तरह सीएसआर की जो हमारा आज प्रोग्राम है उसमें जो इनपुट आएगा उसमें अगर लगता है कि भाई हम कहीं गलत बोल रहे हैं या कहीं लगता है कि आपको इस तरह अमेंडमेंट चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें अपना इनपुट भी दें. ऐसा नहीं है कि सिंगल वे रहेगा, क्योंकि
जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, हमने कोशिश की है स्पीकर को कि अच्छे स्पीकर लाने की कोशिश की है। फिर भी अगर लगता भी ये यहाँ कहीं और अच्छा वैल्यूएशन दे सकते हैं, वो आप दें। और हमारे बीच कामेश आचार्य जी हैं, आप कोल इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। और बाकी बहुत सारी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। सिक्योरिटी मीटिंग एंड कॉर्पोरेशन से हमारे डायरेक्टर है HR मिस्टर सिन्हा जी, वो थोड़ा अभी ज्वाइन करेंगे। और IFCL से भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं कई, मतलब 8-10 PSU से, IRCTC और आपका राइट्स लिमिटेड में संजय मेहता जी हमारे बीच में है। संजय मेहता जी वहाँ अपना GM CSR है। तो संजय कितना कौन होगा, CSR कितना फंड होगा आपका? 30 करोड़ है, लेकिन चलो जी सामने तो आपका 30 करोड़ लेकिन फिर भी एक्चुअल में क्या होता है, जो CSR फंड चाहे 1 रुपए का भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छे कामों लगे, उसकी एक सार्थकता ज्यादा होती है, जो मैं समझता हूँ। फंड तो आप 1000 करोड़ का भी हो, लेकिन अगर वो उसकी सार्थकता नहीं होती तो नहीं है। हमारे बीच HPCL से कोई आए हुए हैं अभी, उनका पार्टिसिपेंट तो है हमारे पास। तो इस तरह बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी NGO के लोग हैं, मोहम्मद आजम आलम भी है और कई NGO के लोग भी हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा है कि जो हमारा फुल डे का ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमने एक रखा है इनॉग्रल सेशन और 4 रखे हमने वैलिडिटी सेशन, सॉरी एक वैलिडिटी, एक इनॉग्रल एंड 4 सेशन है टेक्निकल सेशन। टेक्निकल सेशन में हमारे बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं और हम चाहेंगे कि उनका भी जो वर्कशॉप भी आपको मिले और उससे कुछ आपको लाभान्वित हो। साथ ही अलका मित्तल जी और PR जयशंकर जी जो हैं, ये भी अपनी कंपनी के बारे में या क्या और अच्छा इनपुट हो सकता है वो बताएंगे। पुनः एक बार सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। तो इन्होंने पूरा ब्रीफ दे दिया कि हाउ द सेशंस विल बी। 4 सेशंस टेक्निकल सेशंस, बट मेक दिस टेक्निकल सेशन इंटरैक्टिव। जैसा कि दीनदयाल जी ने बोला है कि जितना इंटरैक्शन होगा उतना अच्छा होगा। लास्ट हमारा जो एक प्रोग्राम था उसमें इतना इंटरैक्शन हो रहा था कि हमको बीच में रोकना पड़ता था, और उस लेवल तक भी नहीं जाएंगे, बट यस देयर शुड बी इंटरैक्शन। कभी कभी होता है ना, जो स्पीकर आते हैं उससे ज़्यादा जानकार आगे हमारे साथ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं तो उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है, शेयर करना चाहते हैं, वी आर मोस्ट वेलकम। विल डेफिनेटली लिसन टू दैट एंड सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू फ्रॉम CSR रिसर्च फाउंडेशन। सो आपकी जो बातें हैं, अगर हम सही जगह पहुंचा पाएंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे उसको कि वो जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ पहुँचे। Now we have with us Sri Vijay Jaising. I request him to come and give his. Thank you, Ved Prakash ji. Deen Dayal ji, respected Deen Dayal ji, or Alka ji, I think, and all the respected dignitaries of the dais as well. Very nice to see so many independent directors of the PSUs. It gives me great pleasure to be here. And as usual, I always say, CSR Foundation, Research Foundation, they are perhaps the only organization which is actually taking this discussion very, very focused manner every year. And I'm very happy to again be associated in this. So we are passing through a very interesting phase in the country. And CSR is a very integral part of every corporate. And IIFCL is also a very, it has been a very prominent player, and we are trying to kind of scale up our activities in this field. For those who, for those whom IIFCL needs introduction, I can say that we have an infrastructure finance institution, commercially with to take up the infrastructure financing on commercial principles with public interest, 100% owned by the Government of India. And so far we have financed projects. The largest number of
public-private partnership projects in India. India actually leads in public-private partnership projects, having started the public-private partnership projects in this new millennium. Today, we are the world leaders, and 25% of these projects we have financed, almost 600, 650 projects, and to the project outlay of about 10 lakh crores. And we have disbursed and we have got footprints across the sector, about 25% of the national highways, of 17% of the national port capacities, all the private airports. Now the metro projects, the new public-private metro projects, and urban infrastructure, and so on and so forth. We have got almost 650 projects financed so far, and still going strong. And I think as a corporate social responsibility programs, almost 10 lakh units have a benefit, particularly in rural areas and backward regions. Almost all the spheres, 26 states, and 350 to 400,000 school children have benefited. So I think it's quite a story of IIFCL. But looking at the topic of the day, I think regulatory framework and challenges. I think I would say more opportunities than challenges. Challenges will be definitely there. Every challenge has its own opportunity. I think today's milieu also presents the same. If you just go back a few years, a few decades, earlier in the pre-independence era, we had only the individual initiatives. You had a idea of trusteeship, which actually was aiding the kind of charity measures, which later culminated into family trusts, corporate trusts, then NGO sponsorship, and all these, and now crowdfunding as. This focus came only after in this 2013 corporate social responsibility clause 135 in the Companies Act. And ever since that, 1 trillion rupees has been spent in this by the corporates. And only last year, 22,000 crores was the spending. And I understand more than 50,000 crores still lies unspent. And health and education constitutes the maximum allocations. Rightfully so. I think health, we have the cities and the towns having good hospitals, but now it is more or less in a public-private partnership and more in the private space. But when you look at the district level, still a lot of things have to be done. And a lot of healthcare facilities, there's a big gap. And there is where I think we need to blend finance. We need to kind of see how best corporates come together with the government. And then we see how best we can improve the standards of this district health facilities. One such initiative we have taken in Gurgaon, where we spruce the entire diagnostic center with state-of-art equipments. And I think that is the entire capital expenditure was borne by us. And Pramodji was just mentioning that he's also having a hospital. And there is there's the same story where the capital expenditures have been sponsored by different people, and running cost is the one which actually is being charged with for the patients. In the Gurgaon context, the municipal corporation runs the show. So I think we need to kind of see how best we can promote such initiatives by blending our finance.
But more importantly, I think we are also trying to get the state governments to sponsor public-private partnership on a public-private partnership basis, how we can not only upgrade these facilities, but also expand their outreach. So this is in health. Education is another area. Today, maximum education institutions run on trusts, is run by trusts. I think banks can't fund trusts. So that is another area where you need to look very carefully, because the purpose with which trusts were formed. Today, we are looking at a different need. So I think there is something where interventions needed. There are other areas like slum development and other welfare measures for armed forces, culture, heritage preservations, technology incubation measures. These all don't get much funds. I think these are some areas we need to kind of look at, and we have been laying emphasis on that. From the geographical funds, you can see that the maximum CSR spending has been in Maharashtra, Gujarat, and Uttar Pradesh, and Telangana, Andhra Pradesh. The Jammu Kashmir or Himachal Pradesh, northeastern states have been lagging behind. I think IFCL initiatives have been more directed towards northeastern. This is more, there is a challenge and there's a lot of allocations, but the way it has to be channelized, these deficit areas that need to be kind of relooked. Apart from all that, I think the kind of regulatory measures which have come, now impact assessment is again mandatory, and the impact assessments, particularly for projects more than 1 crore and with spending of last 3 years, spending more than 10 crores. I think that's something very, very important. Impact assessment is probably a feedback. I think we should use it as a feedback, and we have to see how best we can. It's like like a PhD or a research work. One work leads to another. I think that chain must get promoted by this impact assessments, and that's what we have taken it up on a voluntary basis long ago, and we have done a lot of impact assessment studies. And to begin with, in 2010-11, we had actually done this Swachh Bharat Abhiyan by sponsoring toilets in a few schools, and we had assessed that the problem before was almost 50% of the girl children, they used to abandon schools because the lack of sanitation facilities. After this program, after 2 years, when we did the assessment, we saw that proportion, something which we have taken up. And apart from that, we have also looked at different areas like clean and green energy, solar pumps. So these are again, these add to the reduction of carbon emissions. So some of these initiatives all go towards an overall all-round improvement in the entire national context. And in the board, Ved Prakash was telling in the morning that board, the role of independent directors, that again matters a lot. Being watchdogs of corporates, they are also they are also the forebearers of ensuring that corporates perform responsibly. So I think that is something, that is why I think all the CSR committees are headed by independent directors. So that's something very important. And so is our committee.
I think going forward, I see a lot of opportunities because of this. Going forward, the challenges which we just mentioned about, this again, is a uh, lot of thought process that we need to have and see how best we can channelize our funds. 50,000 crores almost lying unutilized still in the CSR context. How best we can get these channelized to these deficit areas and get them play a very important role for national development. Thank you very much. Thank you, Jaishankar ji. I think given a lot of overviews and how the CSR spendings has been done by IFCL and how we can judiciously do the expenditure of the CSR fund. यहाँ पे एक चीज जो उन्होंने बताई थी, अनस्पेंड फंड जो उस साल में खर्च नहीं होता है, तो आप उसमें आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. You have to deposit some of the few funds which has been nominated by government of India. So आप सोचते हैं कि उस फंड को हम किसी और फंक्शन में उसमें यूज़ कर लेंगे, वो नहीं हो पाता है. तो जो भी आप काम करें उसको यूज मेक श्योर दैट दिस वॉट एवर प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. With us we have guest of honor Sri Virender Singh Masji. He is a member of parliament and welcome him to this. And we have Sri H.N. Sharma ji. He is a patron CSR Research Foundation and he was a very close associate of Prime Minister Shri Chandrasekhar ji. उनके जो बाकी जो काम है जो उन्होंने स्टार्ट किए थे उनको सबको आगे बढ़ा रहे हैं. उनका जो फाउंडेशन है उसमें ही इज एक्टिवली playing a role and doing a lot of CSR work for them. So just for one break, we'll have a lighting of lamp because our guest is here. So after that, we'll listen to Dr. Alka Mittal and others. I request all the dignitaries to come to the lighting of lamp, please. I request all the independent directors, please come forward.
मैं हमारे मुख्य अतिथि आज के श्री वीरेंद्र सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। बलिया से पार्लियामेंट है और हमने कमिट किया है, मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम वहीं करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीरेंद्र जी, अच्छा दूसरा थोड़ा प्रोग्राम में चेंज किया हुआ, संतोष गंगवार जी को आना था, तो संतोष गंगवार जी को सुबह कहीं आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, एमसीडी भी है, गुजरात भी है, तो उनका फोन आया कि मैं अभी सुबह नहीं आ पाऊंगा, कोई और टाइम दे दीजिए। मैं जो टाइम में आप आ जाए उसमें आ जाइए। तो मैंने सर भाई साहब से कहा कि मैंने एच.एन. शर्मा जी से कहा कि मेरी वीरेंद्र जी को आप लेके आए हैं, तो मैं एच.एन. शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमारे सत्कार को स्वीकार किया। एक बार पुनः मैं वीरेंद्र जी मस्ती जी का बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सर 2-4 मिनट में जो भी हमारे उद्बोधन करें। थैंक यू। CSR रिसर्च फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र एच.एन. शर्मा जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस सम्मेलन में आए हुए सभी देवियों तथा सज्जनों, मुझे 3 दिन पहले ये CSR रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख लोगों ने, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बहुत दिन से संसद में हूं, मैं प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कार्यक्रमों को अपने जीवन में चुनता हूं और उसी का जीवन जीता हूं। मैंने कहा कि मैं जरूर इसमें शामिल होना चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अनुसंधान संस्था जो रिसर्च कर रही है कि आर्थिक व्यावसायिक संस्थानों से मेरे समझ से दुनिया के किसी भी देश प्रकृति से इतना अकूत शक्ति नहीं प्राप्त किए हैं। भारत ही उसमें ऐसा देश है जो प्रकृति से, और प्रकृति के उस शक्ति का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, जानता हूं कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग ठीक से जानते होंगे। हिंदुस्तान 6.5 लाख गांवों में बसता है। 6.5 लाख गांवों में ही भारत की आत्मा बसती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि CSR रिसर्च फाउंडेशन गांव के विकास की चिंता नहीं करता होगा, लेकिन एक किसान होने के नाते मैं इस बात को पुनः निवेदन करूंगा। किसान बार बार निवेदन करता है, धरती माँ से भी निवेदन करता है, प्रकृति से भी निवेदन करता है, और प्रकृति ने जिनको दिया है उनसे भी निवेदन करता है। किसान तो निवेदन करने वाली एक संस्था है जो प्रकृति से प्राप्त होता है और समाज को प्रदान करता है, खाता भी है, खिलाता भी। इसलिए हम इस रिसर्च संस्था फाउंडेशन को निवेदन करूंगा कि कृषि के विकास में हम क्या कर सकते हैं, CSR से गांव के विकास में हम क्या कर सकते हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि बापू मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि बाजार के असर ने गांव की उस संस्कृति को, गांव की उस परंपरा को, गांव की उस सभ्यता को कहीं न कहीं डिगाया है। हम कैसे उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, जो नहीं मानता है, मां मानता है और मातृभूमि मानता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां के नागरिक जमीन को मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड नहीं कहते। ये किसी देश की एक जमीन का टुकड़ा नहीं कहते, मातृभूमि। हम कैसे उस मातृभूमि के परंपरा को, संस्कृति को, सभ्यता को, हम कैसे, श्रेष्ठ परंपरा हमारी, आप देख सकते हैं कि बाजार के असर में